So I welcome you all to lecture number 2 of BEE. Am I audible? Please check if I am audible. Please give me clarity whether I am audible. Okay. So today's lecture is focused on the first chapter again, and let us see what we have to do in this particular chapter. Please understand that these lectures will be on record, will not be visible from the first 3 lectures. So this is your last demo lecture, and I will be assisting only the students of SDC for admission process. And I'm being very clear in my judgment, and in anything, I will not be taking any personal calls, and it is only the students who are students of SDC of the FE batch that will be assisted for admission or any further process. I hope I have made myself officially clear. All those who send me the names regarding their so-called salary slips and fees have been sent to the organization. But please remember that all of you have to keep the first fees ready. Irrespective you have applied for a loan or a scholarship, the first fees cannot be deducted from any scholarship or loan. The first fees has to be available and has to be submitted to colleges. They will not wait for you to get sanctioned from any authority. I hope that I'm making it very clear to all of you. Is that clear, children? So please see that the first fees should be there in your accounts and none of the checks can bounce. You will lose your admission. So please take care that nothing of that sort happens if you have decided that you are going for studying for this particular course. So today, does anybody have the calculator? Even if you don't have the calculator, that's fine. If you have the calculator, it will be great. You can get it from your friends for time being. You know, there'll be engineering students if you know any of them. And or purchase it or whatever it is. I'm just asking you to do so because to understand the calculator, it does take a little time, the speed on the calculator. So has anybody got it today by any chance? Because then we will do the explanation, we may not be able to do the calculation. Anyone? Okay. So okay, so Tanvi and others have bought. Yeah, the older model will also do, but the problem with the older model is that you cannot substitute direct values. I mean, it's not seen on the screen. Yeah. Yeah. So let us take a look at, today we are going to look at star delta transformations. The derivation of star to delta, delta to star will be done in the regular class, and it's going to be for 10 marks. So for 10 marks, we will be doing this. This is an official, a derivation which is going to take us. So that will be done on the regular class. Right now, I'm only looking at the direct formula. So if you look at this, this is called as the delta. And if you look at this, this is called as a star. So we call it the delta and the right side is called as the star. Now, how do we understand how to draw this, or ये कब यूज होता है? अगर हमारा कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट अगर हमारा कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट अगर हमारा कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट सीरीज या पैरेलल नहीं है, सीरीज या पैरेलल नहीं है, the moment it is not series and it is not parallel, then we have to go for star to delta transformations. So what do I mean by saying that it is not series or parallel? I hope all of you are sitting in one place, have a notebook in front of you, because these lectures cannot be repeated.
So now between RC and RB, we draw one resistor. So that is the resistor that you're seeing here. Between C and A, we will have another resistor. And between B and A, we will have another resistor. So that's how we get R1, R2, and R3. R1 is between over here between B and C. R2 is between C and A. And R3 is actually connected between B and A. Any doubts here? Does anybody have a doubt? What I just said? I said कि दो के बीच हम एक को connect करेंगे. I repeat once again. We have a triangle. मतलब ये triangular structure होता है. Triangular structure में this is A, this is B, and this is C. So whenever we want to make calculation simpler, हम दो के बीच मतलब ये हमारा सेंटर है तो हम यहाँ पर भी एक रेजिस्टर होगा, यहाँ पर भी एक रेजिस्टर होगा, तो हम बीच में एक रेजिस्टर लगा रहे हैं. मतलब हम इसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं. दिस इज कॉल्ड डेल्टा टू स्टार. मतलब R1 निकालना है हमें, and R1 will depend on आजू बाजू. So you can see आजू बाजू RB into RC upon RA plus RB plus RC. Similarly R2. So R2 कहाँ join हो रहा है? Between A and C. So R2 is RC into RA upon RA plus RB plus RC. Similarly, we have R3 which is connected between RA and RB, and therefore we have RA into RB upon RA plus RB plus RC. इस तरीके से we will be getting all the formulas, and this is nothing but delta 2 star. I hope you got it. This is delta 2 star. कोई भी डेल्टा को हम स्टार मॉडल में कन्वर्ट करते हैं. So that's why this is called delta 2 star. Similarly, if I ask you another one, that is star to delta, that means some places we may have to use this also. Right now, I just want all of you to take down the diagram. So if you can take down this diagram, that is delta to star and star to delta. So delta to star and star to delta. So now we have delta to star and star to delta. So this is the formula when to use. This is for delta to star. हम ऐसे लिखते हैं स्टार को. स्टार को एक दूसरा नाम भी है Y, WYE कहते हैं उसको. We have delta to star, and this we have star to delta. This we have star to delta. So these are very important calculations of this particular thing. Is it completed? Please tell me when it is completed. Okay. So colleges is expected to start in the first week of December. So be prepared. They're going to go very fast because we may have online and offline coaching. There is not going to be any offline coaching completely.
because in a classroom, I think only 30 students are allowed. So I hope you know that you will need to study on your own to a large extent. Let's move ahead. Can we start? Take down this diagram. This is an examination question and they asked us to find the resistance between A and B. So please take down this question and we have to find the equivalent resistance between A and B. So in 12th standard, we have done a lot of these concepts. So that's why this question should not be difficult for many of you, but still there are people who make mistakes on this. So please take down this question and check. First checking that we do is we have to check whether there is a node, kahi par bhi node hai to. So how do we identify a node? Either it should be T shape or it should be plus shape. So either it should be T or it should be plus. So please see whether you're getting T or plus sign. Have you taken down the diagram? Can anybody tell me, looking at this diagram, how many are in series, how many are in parallel? What is the situation? How many are in series? Can you tell me how many are in series? Anybody who can find out how many, which resistors, if you could name them, are in series? I'm giving you permission to unmute yourself. So if you could tell me that how many are in series? Anyone? I'm giving you permission to unmute yourself. Yes. So Devin says 20 and 10. Yes, it's in series. 40 and 10 is in series. 15 and 10 is in series. So can you combine all of this? So you should get something like 2. Then you have a node. Then, okay, first and foremost, you should identify the nodes. Okay. So which are the nodes here? If you look at this, this is a node. If you look, this is a node. If you look at this, this is a node. And if you can see, this is a node. So I'm just giving some names, random names, X, Y, C, D. Chalega? So I'm just writing this now like this. This is B. There is 2 ohms here. So I'm writing all the nodes over here. ये X node है मेरा. ये Y node है मेरा. ये D node है. और ये C node है. और A B तो है ही. So यहाँ से 2 ohms आएगा. ये दोनों कंबाइन होके X और Y के बीच आएगा 25 ohms. फिर आप देखेंगे Y और D के बीच में आएगा 50 ohms. D और C के बीच में आएगा 50 ohms. और यहाँ पर आएगा 8 ohms. So यहाँ पे 8 ohms है, यहाँ पे 2 ohms है, and you're getting something like this. There is a connection between X and D, and C और Y के बीच एक जंपर है. Any other thing that you can calculate, क्योंकि अपने को A B के across निकालना है, ये अपना A है और ये अपना B है. What is the meaning of short circuit? What is the meaning of short circuit? What is the meaning of short circuit? Anybody? What is the meaning of short circuit? हाँ, मतलब short circuit में हम लोग क्या करते हैं? अगर there is a short circuit between X and D, इसका मतलब क्या है? Anybody can unmute. You can unmute and you can answer, because in engineering we can't do chatting. We have to talk, because viva के time पे आपको बोलना ही पड़ेगा वैसे भी. So what is the reason? Short circuit का मतलब क्या होता है? Please unmute yourself and speak to me. In your colleges, you cannot stay as you're saying. You have to be on video. I hope you know that.
सो कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर दैट जब शॉर्ट सर्किट होता है तो पॉइंट्स को क्या होता है? हेलो मैम। यस आकाश। जो XG है वहाँ उनके बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो वो दोनों जॉइंट हो जाएंगे। करेक्ट, वेरी गुड, थैंक यू। सो एक्स एंड डी के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है और वो शॉर्टेड है, इसका ये मतलब है वो सिंगल पॉइंट हो जाएगा। मतलब ये डायग्राम में एक्स को हम डी के साथ कंबाइन करने वाले, मतलब एक पॉइंट हमारा कम हो गया। ओके, सो दैट मीन्स नाउ आई हैव ए से आने वाला 2 ohms which is joining to x. So I'm just going to just write it properly here. So let's say that means एक पॉइंट reduce हो गया, ये मेरा a पॉइंट है, a पॉइंट से मेरा 2 ohms आया। अब ये पॉइंट क्या हो गया, x, d हो गया। फिर ये यहां से कहा जा रहा है, y की तरफ जा रहा है, राइट? और y और x और d के बीच, सो यहाँ पे कितना हो रहा है, 25 ohms। यहाँ पे तो 25 है, यहाँ पे 2 ohms ही है। अब मुझे बताओ B और C के बीच कौन सा पॉइंट है? B और C के बीच हमारे पास 8 ohms है, राइट? अब क्या हो गया सडनली, C और D के बीच 50 था, D तो उधर चला गया, तो यहाँ पे 50 होगा। आई होप यू कैन सी व्हाट्स हैपनिंग। अब Y और D कंबाइन है, मतलब Y और D ऐसे हो गया। Y और D के बीच क्या है, Y और D के बीच था 50, सो ये 50 ohms हो गया। ओके, सो हैव वी डन ऑल द कनेक्शंस या कुछ मिस हुआ है? इज देयर अ मिसिंग पॉइंट? कुछ और भी है शायद जो हम ज्वाइन नहीं कर रहे। व्हाट हैव आई मिस्ड हियर? 2 ohms मैंने लिखा है, 2, 8 लिखा है, 8, 50 50 लिखा है मैंने, 25 25 लिखा है मैंने, क्या मैंने नहीं लिखा है? हु विल आंसर? यस, C एंड Y को मैं क्या करूं? इज इट शॉर्ट अगेन? यस, शुड बी जॉइंड, यानी कि ये वापस क्या है, शॉर्ट सर्किट है। आई होप यू ऑल एग्री कि C और Y वापस क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। इसका मतलब है C और Y जो है वो वापस कंबाइन होगा। दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी 2, दिस इज गोइंग टू बी x, d, दिस इज गोइंग टू बी y, मतलब y और C एक ही पॉइंट है, y और C एक ही पॉइंट है। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। तो y और C के बीच हमारे पर पता नहीं क्या क्या आएंगे, हमारे 25 ohms आने वाले हैं, उसके पैरेलल में हमारा 50 ohms आने वाला है, राइट? दिस इज आवर पॉइंट ए, ये हमारा 2 ohms है, ये हमारा बी पॉइंट है, यहाँ पर हमारा 8 ohms है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। 50 इज कनेक्टेड ओवर हियर, ये हमारा 50 पॉइंट है, और ये जो सी है वही हमारा डी पॉइंट है। दैट मीन्स आई हैव टू कंबाइन दिस, दैट मीन्स हमारा जो सी है वही वही पॉइंट हमारा वाई है, राइट? दैट मीन्स ये सी और ये वाई ज्वाइन होके सिंगल पॉइंट बन रहा है यहाँ पे। तो वो 50 कैसे आएगा, 50 ऐसे आएगा, 50 ऐसे आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड कि वे 50 किधर कनेक्टेड है, एक पॉइंट सी पे है, दूसरा पॉइंट किधर है, डी पे है, इसलिए 50 ऐसे आएगा। और यहाँ पे बन गया तुम्हारा 8 ohms। ये सर्किट अभी थोड़ा सिंपल लग रहा है। डू यू एग्री व्हेन आई से इट इज लुकिंग कंप्लीटली सिंपल? और उसका सबसे बड़ा पॉइंट था कि ये दोनों कंबाइन होते हैं। अब ये 50 50 और 25, very clearly it is a parallel circuit. Very clearly it's a parallel circuit. That means it is going to be what, 2 by 50 plus 1 by 25. Can you calculate and tell me how much? If you have a calculator, you can inverse sign hoga us calculator mein. I wish the class had calculator, but it's okay. 1 by 50 plus 1 by 50 plus 1 by 25. जो भी calculators है आपके पास उसको काम पे लगाओ, कितना हो रहा है वो? 12.5 हो रहा है, करेक्ट? So I hope you getting 12.5 after calculating this much, आपको 12.5 आना चाहिए। ओके, यानी कि आपका जो सर्किट है वो कैसे हो गया है, आपका सर्किट जो है वो है 2, फिर है 12.5 और फिर है 8। सो ये 8 ohms है, ये 2 ohms है और ये 12.5 ohms है। सो क्या आप टोटल रेजिस्टेंस बता सकते हैं अभी? ये तीनों के तीनों कैसे चले गए ये सीरीज में? सो कैन आई से माय आंसर इज 22.5।
I hope everyone gets this. Yes, 22.5 is your answer. And you should be able to do this. This is one of the toughest chapters of BEE. अगर ये आता है तो it is 40 marks in your pocket. ये chapter की weightage आपके पूरे BEE में सबसे highest है. So that means 40 to 45 marks of the paper is dedicated to DC circuits. So just take it down and let me know when it is done. We go on to the next question. Please tell me when it is completed. Is it completed? Can I move ahead? If any doubt is there, please clarify right now, because this is simple. Here we have not used any star to delta or delta to star transformation, because it turned out to be a series parallel circuit. So if it is not a series parallel circuit, then only we will be using star to delta. You will not unnecessarily use star to delta. That's what I'm trying to point out. I hope it's completed. Can I move ahead? शॉर्ट सर्किट कंसेप्ट इस क्वेश्चन में पॉइंट आउट किया गया है कि your X and D has to be short, and so your C and Y also has to be short. We will be doing 100 numericals in this chapter. So to complete 100 numericals, I need your support. I hope you are doing. Yeah. Thank you. Bye. I'm proceeding now. ते दार बंद करा. Yes. Let's proceed. Now this is very simple. They've asked you find the current. Now, if they've asked you to find the current, let us start. Whenever you look at any particular circuit, please start from the corners. I hope you understand when I say corners. ये 2 ohms और ये 2 ohms कैसा है? Series. How is this 2 ohms and how is this 1 ohm? This is also in series. Okay. Now, similarly, which other thing is in series? Anybody? पहले series parallel को समझते हैं. क्या इसमें कुछ series में है या नहीं है? Is anything in series here? Anything else in series that you can see? So I'm just redrawing the circuit. ये रहा 30. यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 2, ये हो गया 1, ये हो गया 4, ये हो गया 3. अब ये मैंने लिख दिया 3s. This is my 3 ohms. This is already my 3 ohms. This is my 4 ohms. This is my 4 ohms. And this is my 2 ohms. This is my 2 ohms. This is my 1 ohm. And this gets connected like this. Is it correct? Is it okay? Now, can you see anything in parallel? अगर आप ध्यान से देखेंगे, so you can see that these two are in parallel, and you can see that these two are in parallel.
That means now my circuit will be 30 volt will come here, and I can draw. Now just see how I'm drawing it. I have my 2 ohms here, ye wala 2 ohms. This is my 2 ohms. This is my 1 ohm. This is nothing but my 2 ohms. I hope you agree. And this is nothing but my 1.5 ohms. Now this 1.5 and this 2 are going to go in series, and therefore this is going to be my 30. This is going to be my 2. This is 2. This is 1. This is 2. This is 2. This is 1. And this is nothing but 3.5 ohms. If you have your calculator, or you can calculate this, tell me how much is 2 parallel to 3.5. Can you please tell me how much is 2 parallel to 3.5? How much is 2 parallel to 3.5? Okay, so it's 1.27. Now that means the circuit is further reduced to, क्या हो जाएगा यहाँ पे? So I'll just erase it here only. So you know ये समझ में आ जाएगा. यहाँ पर अपना कितना आ रहा है? 1.27. So यहाँ पर आएगा अपना 2, ये नीचे का 1, और यहाँ पर हो रहा है 1.27. 1.27 plus 1 is how much? 2.27, right? So आपका जो सर्किट आएगा, अब ये 2.27 parallel to 2. Can you tell me how much it is? 2.27 parallel to 2. तो रेजिस्टर आना चाहिए आपको 1.06. आई होप यू आर गेटिंग दिस. एंड योर वोल्टेज शुड कम 30 वोल्ट. तो क्या हम करंट निकाल सकते हैं? करंट इज 30 डिवाइडेड बाय 1.06. Put it in your calculator and tell me whether you are getting the desired answer. Please tell me whether you're getting the desired answer. I hope you're getting 28 point something aega answer. I believe everyone has reached that answer. 28.3 ऐसा कुछ आएगा. याद रखना कैलकुलेटर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेसिमल 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपको लिखना है. So I think you should get precisely 28.301 something. So याद रखना 3 decimal places will carry full marks. 28.301 आना चाहिए. 3 decimal places will carry full marks. If you're not giving 3 decimal places, then it is -1 according to the sheet. I'm proceeding to the next question. Now let's see whether you can think about this. So when you look at this question, can anybody tell me which resistors are in series and which resistors are in parallel? So the first job of anybody during this question time is to identify the circuit. That's your first job. These are 10 marks questions. It's a straight 10 marks and they're very particular that you be able to track this. So can you tell me if there are any resistors in series? तो सीरीज क्या होता है कि वन एंड एक रेजिस्टर का आउटपुट जब दूसरे रेजिस्टर के इनपुट से कनेक्ट होता है तो हम सीरीज कहते हैं. और पैरेलल क्या होता है कि जब दोनों रेजिस्टर्स को 2 कॉमन पॉइंट्स होने चाहिए तो हम कहते हैं कि जब वो दोनों को 2 कॉमन पॉइंट्स होते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं? पैरेलल. So can you tell me how many of this are in series? Anything that is in series here. Let me see who can detect. Is there any resistor in series or parallel here? Anybody?
In this electrical circuit, is there any two resistors in series? Yes, Devin, very good. If you look at this circuit carefully, there is no series and there is no parallel. कोई भी सर्किट पैरेलल या सीरीज में नहीं है. ये पहला आइडेंटिफिकेशन होता है, क्योंकि अगर ये आइडेंटिफिकेशन रॉन्ग गया देन वी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. सो क्या आपको बहुत सिंपल है, बट इतना याद रखना कि यहाँ पर देखो, अगर मैं 4.5 और 3 को बोलूं कि पैरेलल है, तो क्या करेक्ट होगा? क्योंकि पैरेलल का क्या कंसेप्ट होता है, दो कॉमन पॉइंट्स होने चाहिए. तो उनको एक कॉमन पॉइंट इधर है, दूसरा कॉमन पॉइंट किधर है, तो वो पैरेलल में नहीं है. क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये 3 और ये 3 पैरेलल है? नो, आई कैन नॉट से. ये दोनों इधर ज्वाइन हो रहे हैं, पर दूसरा कॉमन पॉइंट किधर है? तो पैरेलल की ये खास बात होती है कि दे शुड गेट टू कॉमन पॉइंट्स. तो ये सर्किट में कोई भी कॉमन नहीं है. अगर वो कॉमन नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? क्या आपको यहाँ एक डेल्टा दिख रहा है? यहाँ पर भी एक डेल्टा दिख रहा है. यही काम पहले करना है. यू हैव टू सर्च फॉर डेल्टा. अब मैं ये डेल्टा को सेपरेटली यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि दोनों डेल्टा के वैल्यूज आप देखेंगे कि सेम है. सो आई एम जस्ट ड्रॉइंग इट फॉर योर कन्वीनियंस. एग्जाम में हमें ये कुछ करने की जरूरत नहीं है. तो ये हमारा डेल्टा है. अब ये कितना है? 4.5. ये कितना है? 3. और ये कितना है? 7.5. तो इसको मैं स्टार में कन्वर्ट करने वाली हूँ. स्टार मतलब दो रेजिस्टर के बीच एक, दो रेजिस्टर के बीच एक, दो रेजिस्टर के बीच एक. आई होप यू आर गेटिंग दिस. तो मैं ऐसे ही नाम दे रही हूँ उधर 1 2 3. फॉर्मूला लिख रही हूँ. जो ये जो पहला वाला रेजिस्टर दिख रहा है 1, आजू बाजू मतलब R1, I will call it. R1 is 4.5 multiplied by 7.5 upon 4.5 plus 7.5 plus 3. Can you please calculate this? 4.5 into 7.5 upon 4.5 plus 7.5 plus 3. Can you tell me how much you are getting? Anybody who can give me that calculation? 4.5 into 7.5 upon नीचे 4.5 plus 7.5 plus 3. Okay, you are getting 2.25. I hope you are getting 2.25. ये हमारा ये वाला रेजिस्टर हुआ, ये R1 वाला. नाउ R2 के लिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आजू बाजू लेते हैं. सो R2 इज इक्वल टू 3 इंटू 4.5 अपॉन कितना होगा? टोटल डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा. 7.5 प्लस 4.5 इज गोइंग टू बी हाउ मच? 12 प्लस 3 ना 15 हो रहा है. I think it is 15, right? So are you getting 0.9? Yes, Dia is giving me the answer. 0.9 is the correct answer. Right? Similarly, मुझे ये थर्ड वाला ढूंढना है. तो आजू बाजू, यहाँ पे आजू बाजू कौन है? 3 and 7.5. So I am going to take R3 as 3 into 7.5 upon 15. Can you please tell me this answer? So when you convert delta to star, the trick is आपका डिनोमिनेटर सेम रहता है. आप देखेंगे आपका डिनोमिनेटर सेम रहता है, न्यूमरेटर चेंज होता रहता है. एंड इट इज वेरी सिंपल. इसके बीच में चाहिए तो 4.5 और 7.5 को मल्टीप्लाई करो. इसके बीच में चाहिए तो 4.5 और 3 को मल्टीप्लाई करो. इसके बीच में चाहिए तो 3 और 7.5 को मल्टीप्लाई करो. सिर्फ इतना याद रखना कि पोजीशन भूलना नहीं है. आई होप यू आर गेटिंग 1.5. So I have people answering 1.5 in the chat box. So I believe it is 1.5 and you have all got that 1.5. एक बार 1.5 मिल गया
तो अभी मैं इसको रिप्लेस करने वाली हूँ, तो ध्यान से देखिए मैं कैसे रिप्लेस कर रही हूँ। डेल्टा उड़ेगा, यहाँ पर एक रेजिस्टर आएगा, यहाँ पर एक रेजिस्टर आएगा, यहाँ पर एक रेजिस्टर आएगा। नाउ यहाँ पर वो 4 ohms आएगा, ओरिजिनल सर्किट का 4 ohms। यहाँ पर भी कौन सा रेजिस्टर है, वहां पे 3 ohms आएगा, और यहाँ पर वापस जो डेल्टा है वो स्टार बन जाएगा। आई होप यू कैन विजुअलाइज इट। बिटवीन 7.5 एंड 4.5 हमारा 2.25 है, इसलिए यहाँ 2.25 लिखेंगे, 2.25 ohms। हम यहाँ पे लिखेंगे नथिंग बट 0. यहाँ पे 0.9 ohms, नहीं 0.9 ohms उधर है, राइट। यहाँ पे हमारा 1.5 ohms है, और यहाँ पर हमारा 0.9 ohms है। अब आप देखिए सिमिलरली हमें राइट साइड पे देखना है, तो 4.5 और 3 के बीच क्या आया था, 4.5 और 3 के बीच इज 0.9, राइट। सिर्फ न्यूमरेटर चेक करने का, राइट। फिर 3 और 7.5 के बीच, 3 और 7.5 मतलब ये वाला, तो 1.5 ohms आया था, बिकॉज वैल्यू सेम है, एंड दिस इज 2.25 ohms। ये हमारा टर्मिनल ए है और ये हमारा टर्मिनल बी है। आई होप यू कैन सी। क्या अभी ये सीरीज पैरेलल हो गया कि नहीं, क्या वो इजी हो गया कि नहीं? जब आप डेल्टा को ब्रेक करते हैं तो सर्किट चेंज हो जाती है। कैन एनीबडी नाउ लुक एट दिस सर्किट एंड टेल मी which resistors are in series? Which resistors are in series? कौन से रेजिस्टर्स यहाँ पे आपको सीरीज में दिख रहे हैं? Yes, can I say that circuit इस सर्किट में ये तीनों सीरीज में और ये तीनों भी क्या है, सीरीज में। सो कैन आई से यहाँ पर 2.25, ये ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। सॉरी, 5.8 ohms, और यहाँ पे क्या है 6 ohms, यहाँ पे 2.25 ohms, यहाँ पर भी 2.25 ohms। दिस इज ए, दिस इज बी, ओके। ये 5.8 और ये 6 ohms कैसा है, पैरेलल है। ये 5.8 और 6 ohms कैसा है, पैरेलल है। कैन यू कैलकुलेट हाउ मच इट इज? 1/6 प्लस 1/5.8 का इनवर्स चाहिए। इन अदर वर्ड्स, अगर आपके पास नॉर्मल कैलकुलेटर है तो 5.8 इंटू 6 अपॉन 5.8 प्लस 6। कैन यू प्लीज टेल मी हाउ मच इट इज? आई होप यू आर गेटिंग समथिंग लाइक 2 कितना मिल रहा है, 2.949 मिल रहा है, ओके। So if you're getting 2.949, then add it with 2.949. So total resistance between AB should be, I hope you're getting this, 2.25 plus 2.25
प्लस ये दोनों का पैरेलल आ रहा है कुछ तो 2.949 ऐसा कुछ आएगा। इसको ऐड करके देखो कि तुम्हें फाइनल आंसर मिल रहा है क्या। आई थिंक परफेक्ट आंसर आना चाहिए कुछ तो 7 पॉइंट कुछ लोग बता रहे 449 ओम्स करके कुछ आना चाहिए up to 3 decimal places. I hope you're getting this. Any doubts here? So this is how we convert, you know, देखो ये वो डेल्टा का स्ट्रक्चर जो है उसको कन्वर्ट करके आप सीरीज पैरेलल मोड में लेके आ रहे हैं. So that's why it is coming like this. Is it completed? Okay. I'm moving on to the next question. Take a look at this question. ये जाना पहचाना सा लगेगा तुम्हें. Have you seen this before? I think because we have a common thing here. So I think this is something that you have seen. So just to show you this, what kind of circuit is this? Anybody remembers? If you remember, this circuit is very, very common. This is something that you have seen before. Yes, Ashok. This is a Wheatstone's bridge. Yes, Shreyas. This is a Wheatstone's bridge. So Wheatstone's bridge, if you remember, हम अगर इस point को C डालते हैं और इस point को हम D डालते हैं, this is C and this is D. So can I say कि अगर मैंने इसको A बोला है, corners को A और B बोलना है, मान लो इधर C ले लिया और मान लो इधर D ले लिया, ठीक है? So A और C के बीच क्या है? 10 ohms है. तो A और C के बीच 10 है. So आप 10 ohms रखें. आप C और D के बीच भी 10 ohms रखें. आप D और B के बीच भी 10 ohms रखें. राइट नेक्स्ट ये 10 ओम किधर है? इट इज बिटवीन ए एंड डी. सो ए और डी के बीच में 10 ओम्स हो गया और ये सी और बी के बीच में 10 ओम्स हो गया. सो व्हाट यू आर गेटिंग एसेंशियली इज अ व्हीटस्टोन्स ब्रिज. ये कोई पूछने नहीं वाला है, ये तो मैंने ऐसे ही आपको प्रैक्टिस के लिए बताया. तो आपको पता है कि बिकॉज बैलेंस कंडीशन की वजह से 10 उड़ जाएगा. सो 10 उड़ने की वजह से ये सर्किट क्या हो जाएगा? यहाँ पर इफ आई ड्रॉ दिस, कैन आई से दैट ये 10 और ये 10 कैसे चला जाएगा? यू विल गेट इट इन सीरीज. तो ये 20 ओम्स हो जाएगा और ये नीचे भी आपको क्या मिलने वाला है? ये 10 और ये 10 कैसे चला जाएगा? 20. इसलिए फाइनल आंसर क्या आने वाला है? 10 ओम्स, बिकॉज पैरेलल गया. 20 पैरेलल टू 20 इज 10. या ये तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए था, जस्ट टू रिमाइंड यू. नाउ लेट्स कम टू दिस. बिफोर आई गो टू दिस, लेट्स कम टू दिस. क्या ये सर्किट में कोई भी दो रेजिस्टर सीरीज में है? Let me see if you're, you know, whether you are able to detect. Okay, so people can see 2 and 4. कुछ लोगों ने 2 and 4 जवाब दिया, कुछ लोगों ने 11 and 4 दिए. वेरी गुड. सो यहाँ पर जो ए टर्मिनल है, देखो मैं कैसे ड्रॉ कर रही हूँ. क्या ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 6 और ये 6 आपको दिख रहा है. यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, यहाँ पर 41 आएगा, ये 41 आएगा. आई होप यू कैन सी दैट ऑल रजिस्टर्स आर इन ओम्स. ये पहले ही मैं लिख रही हूँ. यहाँ पे 15 है, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 15 है और आप देखेंगे ये 15 यहाँ पर है, ऊपर एक 15 है
और ये जो है 11 और 4 15 हो जाएगा और ये सर्किट बाहर आएगा एंड दिस इज कॉल्ड बी एंड दिस इज कॉल्ड ए. नाउ व्हेन यू लुक एट दिस सर्किट आपको कुछ भी डेल्टा दिख रहा है क्या? यहाँ पे डेल्टा दिख रहा है क्या? ध्यान से देख के बताओ, डेल्टा दिख रहा है? कैन यू सी ट्राइंगल फॉर्मेशन एनीवेयर इन द सर्किट? कैन यू सी ट्राइंगल फॉर्मेशन एनीवेयर इन द सर्किट? ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है क्योंकि ट्राइंगल कौन बना रहा है? कौन रेजिस्टर्स ट्राइंगल बना रहे हैं? Yes, very good. So you can see that this 666 is forming triangle. You can see this 15 15 15 is forming triangle. और बहुत अच्छी बात है क्योंकि सारे वैल्यू सेम है. सो डेल्टा टू स्टार के फॉर्मूला के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि सारे रेजिस्टर्स 1 2 3 जो भी अंदर आएगा विट विल बी 6 into 6 upon 6 plus 6 plus 6. कितना आता है ये? एंड इफ आई कंसिडर दैट इस तरफ कुछ आने वाला है यहाँ पर, ये जो सेकंड ट्राइंगल है, so 4 5 6 I can say is equal to 15 into 15 upon 15 plus 15 plus 15. So can you tell me how much is the answer for 6 into 6 upon 6 plus 6 plus 6? कितना आना चाहिए? 36 upon 18. Yes, 36 upon 18 सबको 2 आंसर आ रहा है. How about 15 into 15? That is 225 upon 45. 225 अपॉन 45 कितना आ रहा है? 5 आ रहा है सबको. सो अभी मैं देखो कैसे रिप्लेस कर रही हूँ. आप देखेंगे मैं रिप्लेस करने वाली हूँ. यानी कि आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस ए एंड देन आई एम गोइंग टू इंसर्ट रेजिस्टर्स. आई होप यू कैन सी हाउ आई एम इंसर्टिंग द रेजिस्टर. ऐसे आएगा. सो दिस विल बी 2, दिस विल बी 2, दिस विल बी 2. ये 41 होगा, ये 17 होगा और ये 5 होगा, ये 5 होगा और ये 5 होगा. दिस इज A and this is B. अब आप सॉल्व कर सकते हैं. You can see that 41 2 and 5 are in series, 17 2 and 5 are in series. वो दोनों parallel जाएंगे and series with 2 and 5. So we will get 2. You tell me how much you are getting here. You tell me how much you are getting here. There will be a 5 ohm and this will be option B. This will be option A. So ये 2 ohms है, ये 5 ohms है. नीचे आने वाला है 17 plus 7. 17 plus 7 will be 24 ohms. एंड ऊपर आने वाला है 41 plus 5 is कितना? 46. 46 plus 2 is 48 ohms. तो अगर आप इसको सॉल्व करते अभी तो आपको आंसर आना चाहिए. 48 parallel to 1 by 48 plus 1 by 24. 48 parallel to 24 देखो कितना मिल रहा है. 48 पैरेलल टू 24 देखो कितना मिल रहा है. 16 आ रहा है. 16 प्लस 7 कितना होता है? 16 प्लस 7 आर यू गेटिंग 23? तो आपका आंसर 23 होना चाहिए. Is it completed? I hope you got 23 as the final answer. Okay, can we do one more question? Or are you done? एक और क्वेश्चन करते हैं just to check because this question is quite important. Let us check one more question. Let's look at this question. अच्छा, ये सर्किट में क्या आपको कोई भी दो रेजिस्टर सीरीज या पैरेलल में दिख रहा है? Is there any resistor which is in series or parallel? Anything that you can see in series or parallel?
नो सीरीज नो पैरेलल। आई होप ऑल ऑफ यू एग्री। यहाँ पर कोई भी चीज सीरीज या कोई भी चीज पैरेलल में नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, क्या आपको यहाँ पे डेल्टास दिख रहे हैं? क्या आपको यहाँ पे डेल्टा दिख रहा है? कितने डेल्टास दिख रहे हैं आपको? बहुत सारे दिख रहे हैं, एक दिख रहा है, दो दिख रहा है, तीन दिख रहा है। कितने ट्रायंगल्स दिख रहे हैं? ट्रायंगल्स आर डेल्टास। तो कितने डेल्टास दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं। ओके, मतलब तू वो बड़ा ट्रायंगल भी पकड़ रहा है शायद। 3 दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं। ओके, तो आपको ये समझना जरूरी है कि ऐसे सर्किट्स में हम डेल्टा टू स्टार यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसके नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत बढ़ जाते हैं। सो हियर जैसे ही ये सर्किट दिखा, तो ये ट्रिक है जो मैं आपको समझा रही हूँ। ये ट्रिक है आपके लिए कि जब भी ऐसा कुछ दिखता है, यू नो, दिस स्पेसिफिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप स्टार टू डेल्टा करने वाले हैं। यहाँ पे क्या करने वाले हैं? स्टार टू डेल्टा। आप डेल्टा टू स्टार यूज नहीं करने वाले हैं यहाँ पे। तो स्टार टू डेल्टा कैसे यूज करेंगे? हमारा जो इंटरनल वाला जो 6, 4 और 5 है, इसको हम कन्वर्ट करके डेल्टा बनाएंगे। ओके, आर ए बी पूछा है, राइट? क्वेश्चन में क्या पूछा है? ए बी पूछा है, यानी कि टर्मिनल ए को लंबा करके छोड़ने का और टर्मिनल बी को लंबा करके छोड़ने का जो पूछा जाता है। आर ए सी पूछा तो ए को बड़ा रखने का, सी को बड़ा रखने का। यहाँ पे ए बी पूछा है, ए को लंबा देने का, बी को लंबा देने का। अब फॉर्मूला क्या था? चलो जाके देखते हैं एक बार। आपके नोटबुक में फॉर्मूला तो होगा ही, जाके एक बार पीछे जाते हैं और ये वाले फॉर्मूला की बात हो रही है। सो अगर मुझे R1 को इधर आर ए के टर्म्स में आर ए चाहिए मुझे, तो मैंने क्या किया है? जो देखो आर ए कहाँ कनेक्टेड है? आर ए इज कनेक्टेड। आर ए कहाँ आना चाहिए? यहाँ पर आना चाहिए, राइट? ध्यान से देखो इसका, इस फॉर्मूला को देखो। आर ए कहाँ आना चाहिए? यहाँ पर आना चाहिए। तो वे कौन से दोनों रेजिस्टर के बीच कनेक्टेड है? 2 और 3 में। किसका कनेक्शन नहीं है? 1 का। तो 1 डिनोमिनेटर में आता है। समझ में आ रहा है ये बात? और बाकी तो देखो न्यूमरेटर तीनों का सेम है, सिर्फ डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है। सो जहां पर हमें कनेक्ट करना होता है, उन दोनों को छोड़ के जो तीसरा वाला होता है वो डिनोमिनेटर में आता है। तो अगर मुझे आर बी चाहिए, देखो आर बी यहाँ पर आएगा। अगर यहाँ पर आएगा आर बी, तो वो किसके बीच है? R1 और R3 के बीच है। वो किससे कनेक्टेड नहीं है? R2, इसलिए R2 डिनोमिनेटर में आया। अगर आप ए और ए और बी के बीच क्या देखते हैं? RC देखते हैं। तो RC is connected between A and B and it has no connection to R3, क्योंकि अगर आप यहाँ कनेक्ट करेंगे तो 1 और 2 से कनेक्ट होता है, तो डिनोमिनेटर में R3 आएगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस वेरी क्लियरली। तो मैं वही फंडा यहाँ लगाने वाली हूँ। तो देखो मैं क्या कर रही हूँ कि ये जो 6, 4 और 3 है, यहाँ पर एक रेजिस्टर आएगा, यहाँ पर एक रेजिस्टर आएगा, और यहाँ पर एक रेजिस्टर आएगा, और ये जो येलो कलर मैंने किया है वो उड़ जाएगा। सो ये कैसे उड़ेगा? सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? द फॉर्मूला फॉर द रेजिस्टर हियर, लेट मी कॉल दिस एज आर ए, लेट मी कॉल दिस एज आर बी, एंड लेट मी कॉल दिस एज आर सी, जो वहां आने वाला है। तो आर ए का फॉर्मूला क्या होने वाला है? आर ए किससे कनेक्टेड है? 6 और 4 से कनेक्टेड है। सो बट इट इज नॉट कनेक्टेड टू 3, यानी कि डिनोमिनेटर में 3 आएगा। न्यूमरेटर में क्या आने वाला है? ये जो येलो कलर है उसका कॉम्बिनेशन लेना है। 6 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 3। आई होप यू अंडरस्टूड। गेट मी द आंसर फॉर दिस। आर बी कहाँ कनेक्टेड है? इट इज कनेक्टेड टू 4 and 3, नॉट कनेक्टेड टू 6। तो डिनोमिनेटर में 6 आएगा। न्यूमरेटर सेम रहेगा, 6 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 3। ये आप मुझे बताए कितना आ रहा है? और थर्ड में आर सी जो है, आर सी देखो कहाँ आ रहा है? आर सी इज कनेक्टेड टू 6 and 3। 1 4 से कनेक्टेड नहीं है, डिनोमिनेटर में 4 आएगा, और ये आएगा 6 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 3। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आर ए, आर बी और आर सी आपको कितना मिल रहा है? ओके, 18 है क्या यहाँ पे? यहाँ पे 18 आता है। ओके, नेक्स्ट आरबी पे कितना आ रहा है? आई थिंक 9 आना चाहिए। या आरसी पे कितना आ रहा है?
ओके, कैलकुलेटर में एक शॉर्टकट है, ये मैं बाद में आपको दिखाऊंगी, जहां पर आपको ये हर बार टाइप नहीं करना होता है. दिस इज 13.5, इसको कैल्क मेथड कहते हैं कैल्सी में, तो मैं आपको वो सिखा दूंगी. सो 18, 9 और 13.5, आई होप एवरीवन गॉट दिस. अब इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो आप देखेंगे मेरा जो नया सर्किट बनेगा, और अपने को कितना मिला था, 18, फिर क्या मिला था, 9 और 13.5, और अंदर के रेजिस्टर्स कौन कौन से थे, 9, 1 और 1.5, 9, 1 एंड 1.5. आई होप आई हैव रिटन इट करेक्टली. तो आप देखेंगे लाइफ बहुत आसान हो गया अभी, सब कुछ पैरेलल में हो गया, सब कुछ पैरेलल गया. सो इसका पैरेलल निकालो, इसका पैरेलल बताओ, हाउ मच इज 18 पैरेलल टू 9, और मुझे बताओ कि पैरेलल में तुम्हें क्या वैल्यूज मिल रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर. कैन यू टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू बिटवीन ए एंड बी पहले, और ये मेरा सी पॉइंट है. तो ए और बी के बीच आपको क्या मिल रहा है, ए और बी के बीच आपको क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है यहाँ पे. ओके, what you are getting, 9 parallel to 1, 9 parallel to 1 will be 9 upon 10, that is 0.9. I hope you're getting 0.9, or 1.5 parallel to 13.5. So 1.5 into 13.5 upon 1.5 plus 13.5 का मतलब होता है divided by 15. So 1.5 into 13.5 upon 15, देखो कितना आ रहा है. 1.35 आ रहा है सबको. अभी देखो हमें आर ए बी ढूंढना है ना, इसलिए मैंने ए का देखो टर्मिनल ऊपर खींचा है और बी का टर्मिनल भी ऊपर खींचा है. इसका क्या मतलब होता है कि आप ये दोनों कैसे ले सकते हैं, कैन एनीबॉडी टेल मी. बहुत क्लियरली दिख रहा है, अभी सर्किट बहुत सिंपल है. अभी बताओ कि ये 1.3 और 0.9 को हम क्या लेंगे, सीरीज में लेंगे. देखो कितना होता है, 1.35 प्लस 0.9 करो, 2.25 आ रहा है. ठीक है, 2.25 को 6 के साथ पैरेलल करो, 2.25 को 6 के साथ पैरेलल करो, 2.25 इंटू 6 अपॉन 2.25 प्लस 6, देखो कितना आ रहा है. टेल मी हाउ मच इज कमिंग. कैन यू पुट इट इन द कैलकुलेटर. ओके, सो आर यू गेटिंग लाइक 1 कितना मिल रहा है, 1.636 कुछ मिलना चाहिए. आई यू गेटिंग दैट आंसर, 1.636 मतलब 1.64 के करीब आना चाहिए. आई होप यू आर गेटिंग दिस. Have you understood star to delta? I have not done the next level. Today I have done only the first level. But will you practice this? Because this is very, very important.
I hope, Divya, I can only provide that after we join or we start regularly. I don't have permission for that. Yeah. Okay. So because officially then I have to give you my PDF anyway, right? Yeah. So this is unofficial lectures. Yeah. So any doubt till now? Have you understood where to apply? So whenever you get this kind of a problem, you should be able to apply star to delta. And in other questions, you should search for what is delta and try to get delta to star. Okay. So that's it from me today. Thank you so much for joining me. I hope you've understood the session and you were able to take away today some part of the session.